Hey guys, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है because today I got one of the most expensive visa of my life, one of the most time consuming visa of my life. So here it is, UK visa. और आप यकीन नहीं करोगे that if you want to get 10-year visitor visa for UK, then it might cost you even up to 85,000 rupees. That is close to 800 pounds or $1,050. That is incredible. I was shocked by that. So in this video, I will be explaining the entire process कि आपको visa कैसे apply करना है, how to get visa on time and all that. So without any further ado, let's get started. So first of all, I would like to share that I've already made a vlog how I applied for UK visa, how I got my biometrics and fingerprints done, and how I mailed my application. So you can check out, it will be in the description below. So now talking about this visa, so you will be shocked. So I got 6-month UK visa because if I want for 10 years, you already know it is 85,000 rupees or around 1,000 US dollars or 800 pounds. तो इस कारण मैंने सिर्फ 6 months के लिए अप्लाई किया क्योंकि मैं एक ही बार जाना चाहता हूँ, बाद में अगर प्लान बना तो दोबारा अप्लाई कर लूंगा. So that's the plan. Also a short disclaimer that if you're applying from India or from US or from anywhere around the world outside UK, it's going to be the same process. तो मेरे लिए भी सेम है, अगर आप इंडिया से अप्लाई करो तो भी सेम है. So now talking about student visa, तो उसके लिए you will be amazed again because tier 4 UK visa also costs around 350 pounds to around 450 pounds. That is also around 35,000 rupees. So that is mind blowing as well. So before I talk in detail कि मैंने UK visa कैसे apply किया और क्यों किया and how you can apply UK visa so that you can get it within 2 weeks, I want to thank our sponsor Wondershare Recover It. Wondershare Recover It is an application that I have personally used most of the times when I have lost my important documents or videos. कई बार होता है that I am sometimes transferring my videos from my memory card to my laptop. I sometimes lose it either in my memory card, कभी कभी वो crash हो जाता है, कभी कभी laptop can crash, so multiple things can happen. So with the help of Wondershare Recover It, you can recover files from your memory card, SD card, external storage, internal storage, even from your computer. So once you download Recover It with the link in the description below, you can recover files up to 100 megabytes for absolutely free. So here's an example. I'm going to create a Word document and then delete it later on, and I'm going to delete it permanently using Shift Delete, not going to move it to recycle bin. Most of the recovering software can recover easily when you are deleting from the recycle bin or trash, but I'm going to delete it permanently, and then I'm going to launch Wondershare Recover It and then select desktop. That's the location of the file I'm recovering from, and then select the file format so that it can do it faster. So after 120 seconds, I have my recovered file in front of me. So it's just amazing. So now coming back to the video, तो आपको पता चली गया that UK visa is very expensive, और अगर आपको one time जाना है या 1 or 2 times जाना है in the next 10 years, I will recommend to apply only for up to 6 months of visa. That will cost around $122 or you can say 8,500 rupees. तो मैंने भी यही वीजा के लिए अप्लाई किया because I'm planning to go only once in the next 2 or 3 years. And मुझे पता चल गया most of the students are not preferring to go to UK to study because student visa is very expensive. तो ये भी कारण है, अगर उन्हें अपने पेरेंट्स को बुलाना है, अगर उन पेरेंट्स बार आना चाहते हैं, then it could cost up to 70,000 rupees of the 10-year visa. So now talking about the process. So मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन visa4uk.gov पे गया और वहाँ पे मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन फिलअप की. सो आफ्टर फिलिंग अप माई एप्लीकेशन एट द वेबसाइट, आई did the payment. That was $122. तो सबसे पहली गलती जो मैंने की that was that I selected the premium processing. तो वो आप गलती कभी भी ना करना because if you will select premium processing, then they will give you 3 types of options, that is bronze, गोल्ड एंड सिल्वर. तो अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए देन यू कैन सेलेक्ट इट, देन दे गारंटी यू कि आपको 1, 2 या 3 हफ्ते में वीज़ा मिल सकता है. बट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट क्योंकि मैंने नॉर्मल प्रोसेसिंग में वीज़ा अप्लाई किया एंड इन द नॉर्मल प्रोसेसिंग आई वॉज एबल टू गेट माई वीज़ा विद इन 2 weeks. तो जिस दिन मैंने शिप किया उसके नेक्स्ट फ्राइडे शिप हो चुका था और मुझे मंडे मेरे हाथ में मिल गया. सो इट वॉज ऑलमोस्ट 2.5 weeks में मुझे वीज़ा मिल गया. एंड नाउ आपको मैं बताऊँ कि मैंने प्रीमियम प्रोसेसिंग इस कारण चूज़ की बिकॉज इन एटलांटा दैट मेरी क्लासरूम के साथ में ही बिल्डिंग है जहाँ पे आई कैन गो एंड गेट माई बायोमेट्रिक्स डन एंड गेट विद the visa process in 15-20 minutes at that location. And I didn't want to go to a location that is 1 hour away. So I thought that premium processing is
of the same price, but I was wrong. Now coming back to the application process, so you have to give 3 types of important information. 1, why are you visiting? Number 2, your bank statements to show that you have enough funds. Number 3, your travel history. So number 1, travel history, उसके बारे में बात करें तो you have to provide your 10 years of travel history, and as an evidence I provided the stamps. तो मेरे जो जितने भी passports थे, in those passports had stamp that I entered this country, exited this country, so I provided that as an evidence. Now next, bank statement. So you have to tell that you have enough funds to stay in UK. So that means कि आपके पास 3,000 to 4,000 euros तो होने चाहिए in case of emergency, etc. So that's what I will recommend, to keep that much in your bank account. So that's around like 3 lakh rupees or 2 to 3 lakh rupees. And then उसके बाद आपको अपने टैक्स स्टेटमेंट्स दिखा सकते हो, अपने बैंक स्टेटमेंट. मैंने टैक्स स्टेटमेंट नहीं दिखाए बिकॉज यूएस में काफ़ी डिटेल्ड सैलरी स्लिप्स होती हैं और बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं. सो सैलरी स्लिप्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स वर गुड इनफ, बट इन इंडिया आई विल ऑल्सो रिकमेंड giving your tax documents so that they can see that कि आपकी consistent income आ रही है. Now number 3, why are you planning to go to UK? So simple reason could be I want to see these so and so location. It could be like London Bridge, London Museum, London Science Museum. तो जो भी आप देखना चाहते हो honestly बताओ. अगर आपको कोई family member रहता है तो अगर आपको उसकी तरफ से invite मिला है, then you can show the invitation letter, sponsorship letter and so on. But I didn't have that. I just gave the reason that I want to visit so and so places, and that was good enough. And now next most important thing is that you need to show that you have a place to live in UK. That could be hotel or that could be hostel. तो आप वहाँ पे reservation करो जहाँ पे आप easily cancel करा सकते हो without any cancellation fee. So I personally use hostelworld.com to book some hostels, and you will be amazed कि एक night की stay was close to 1,500 rupees. So you can book a hostel, and if you don't get a visa you can cancel it. It's absolutely free, और मुझे सिर्फ $10 अभी देने पड़े, बाकी मैं बाद में दूंगा. So it's just amazing. And then I gave the evidence that this is the place I'll be staying, the address, phone number of that location, etc. And then I paid $122 for the visa application fee, 6 months, जैसे मैंने आपको बता ही दिया. And then after paying the fee, I reserved my biometrics appointment. So that was in Atlanta. I went there, आपने vlog में देख लिया होगा. So I went to that place on the same day. तो फटाफट सब कुछ बहुत जल्दी हुआ. जिस दिन मैंने application भरी उसी दिन मैं biometrics लोकेशन पे चला गया, and then I got my biometrics done. I had my documents in hand. I mailed it on the same day. So before mailing, आपको मैं बताता हूँ, you can use vfs.com. तो वहाँ पे आपको in the application they will tell you that you can submit all the documents online. That is safer because it is kind of risky because through mail the documents might get like spoiled or something. So that is safer. You can submit all the documents online and get your UPS receipt. तो आपको इंडिया में शायद कोई और receipt, like it could be Blue Dart or any receipt, so that you can get your documents back. So that might cost you $20 to $40 depending on where you're living. So it costed me personally $40 to get my documents back. So I added my first page of application, my UPS return receipt, ताकि मेरे documents वापस आ जाएं, and my passport in the folder, and then I mailed it to New York so that I get my visa. And here you go, I got it after 2 weeks. It was shipped after 2 weeks, and I got it on Monday. So मैंने Friday apply किया था. So 2.5 weeks. It was just amazing. But now talking about the expensive, सबसे बुरी बात यूके वीज़ा की है, they will not tell you about your application. आप ट्रैक नहीं कर सकते easily, क्योंकि इमेजिन करो मुझे ऑनलाइन देखना है कि वीज़ा लगा नहीं लगा, आप नहीं पता कर सकते. You have to call them or email them, and it is very very expensive. अगर आपको कॉल करके उनसे पता करना है, they will cost you 1.37 pounds an hour. तो उसके कारण मेरे 20 pounds तो ऐसे खर्च हो गए. कभी कभी मुझे पूछना होता था कि मैंने लोकेशन चेंज करनी है. जैसे मैंने आपको बताया that first I applied to the location next to my classes, तो वहाँ पे प्रीमियम प्रोसेसिंग थी, तो I had to cancel. तो कहते हैं आप कैंसिल ही कर सकते हैं, आपको ये एप्लीकेशन से विड्रॉ करना पड़ेगा, इसके लिए रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू अप्लाई थ्रू अ न्यू एप्लीकेशन. सो आई हैड टू आस्क देम ऑन द कॉल. सो दैट कॉस्टेड मी 20 pounds. अगर आप ईमेल करोगे दैट माइट टेक टाइम, दैट विल टेक अराउंड 48 hours, बट दैट्स चीपर बिकॉज अगर आप ईमेल करके पूछोगे दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 6 pounds for one email, and you can reply and talk to them back and forth. So I will recommend, अगर आपके पास टाइम है then stick to the email, because अगर आप बार बार कॉल करोगे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे. So never call them. It is so expensive. So that's the process. और आप यकीन नहीं करोगे, इंडिया में मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, they had to wait for like months because they didn't provide enough information. तो बार बार उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, कॉल करनी पड़ती थी. That was very expensive. So I will recommend हमेशा email ही करो, and after emailing you will be able to track it easily because you can reply back and
एंड फोर्थ, और आपको पता चलता रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन कौन से स्टेज पे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है आप उन्हें ईमेल के थ्रू और उनकी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो. सो दैट विल बी द बेस्ट टिप दैट आई कैन प्रोवाइड. सो दैट्स इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव बट लग गया. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ एंड आई विल श्योरली लेट यू नो व्हेन आई एम गोइंग एंड व्हाई आई एम गोइंग. सो दैट्स प्रीटी मच इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. Goodbye.